Hello everyone. This question appears in class 7th NCERT chapter of integers. This is second question of its exercise 1.4. So the question says that verify that a divided by b plus c not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c. So हम verify करना है. So part A is LHS equal to a divided by b plus c is equal to a वैल्यू पुट कर देंगे. a की वैल्यू 12, b -4 एंड c 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन -4 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास -2. 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम. सो 6 अपॉन -1 -6. देन RHS इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c. वैल्यूज पुट कर देंगे. a की वैल्यू हमारे पास 12, b की वैल्यू है -4 प्लस a की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4 से 12 3 टाइम एंड 2 से 12 6 टाइम. 3 अपॉन -1 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3. सो LHS नॉट इक्वल टू RHS. So it's verified, and in part B, LHS is equal to a upon b plus c is equal to a की वैल्यू हमें गिवन है -10, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1. सो 1 + 1 is equal to -10 upon 2 is equal to -5, and RHS is equal to a upon b प्लस a अपॉन c. वैल्यूज पुट कर देंगे. a की वैल्यू हमारे पास -10 अपॉन 1 प्लस -10 अपॉन 1 इज इक्वल टू -10 -10 इज इक्वल टू -20. सो LHS not equal to RHS. It's verified.